Hello students, good morning and welcome back. In the last video we have discussed about equations of motions and we discussed how to derive these equations in two different ways. One was graphical method which is there in the syllabus, another was calculus method which is not there in the syllabus for this year 2020-21, but it's important, that's why we did it. Now today here in this graph, in this video, we will discuss how to use those expressions in numericals. When we use those expressions in numericals, what are the things we need to consider? We need to think about it, okay? So, numerical concept for applying equations of uniform accelerated motion. What are those equations? V equals to E plus AT, S equals to ET plus half AT square, V square minus V square equals to 2x. Now, first of all, try to understand T. क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे पहले तो हमें टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि यस फ्रॉम दिस टू दिस वी आर अबाउट टू अप्लाई द फॉर्मूला ओके सो टी इज टाइम interval from t initial to t final. For example, 5 to 8 second. So t initial is 5th second, t final is 8 second. मुझे 5 to 8 में ही फॉर्मूला लगाना है. So first we need to choose the time interval. Clear? Next, what is v? Velocity at final time. That is, if I consider 5 to 8, that is velocity at 8 second. It is v. What is u? Velocity at initial time 5 second. You understand? What is a constant acceleration from initial to final? Then only we can apply this formula, otherwise we cannot apply. Whichever time interval you are choosing, from initial to final time, the acceleration should be constant. If it is changing, you cannot apply this formula. You have to apply only in that time interval where the acceleration is constant. Clear? Next, what is this? S, displacement from t initial. So first we need to discuss the t initial. First we need to define the time interval. Then with respect to this time interval, V, U, A, S will be defined. Clear? Now, very important part with an asterisk. When we apply these formulas, these things you have studied in class 9. You did, but you don't know. But you never understand this part. When we apply this formula, we have to consider all the vector quantities should be in same direction. What are the vector quantities? Velocity, acceleration and displacement. So initial velocity, final velocity, acceleration, displacement must have same direction. They must be in same direction, then only we can apply the formula, or we cannot apply the formula. Okay, so the student make mistake in this and this concept. Whichever time interval you are fixing, in that time interval, the acceleration should be constant. Next, all the vector quantities should be in same direction. Initial velocity, final velocity, acceleration and displacement must be in same direction, otherwise we cannot apply this formula. Okay, now comes to next topic, distance traveled in nth time, nth time. Now what is the difference between this? The formula is dn equals to u plus a by 2, 2 into n minus 1. d नीचे छोटे से subscript में n. Okay, u plus a by 2, 2n minus 1. Now how to understand the concept? Try to understand. When you watch a cricket match, if you don't watch, then watch it, or you don't want to watch the cricket match also, use the stopwatch. As soon as you stop, use the stopwatch. For example, let's talk about cricket match. 1 over contains 6 balls, right? How the first over counted? 1.1 or 0.1? The first over count from 0.1 to 0.6. That is called first over. That is 0 to 1 is the first over. Then 1 to 2 is the second over. Then 2 to 3 is the third over, right? Similarly, time calculation is also like this. 0 to 1, 1 second. 1 to 2. तो हमें ना एक misconception होता है. 1 second मतलब क्या? 1 से 2. गलत है. That is not 1 second. So see, for example, the body is moving in this direction. Straight line. This is t equals to 0 second, 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second. Okay. The formula which you studied, S equals to ut plus half h square. What is this formula? This formula is for a particular time interval. For example, 0 to 5, distance traveled is S5. That is this formula, S5. It is the distance traveled from 0 to 5 seconds. 0 to 5 seconds. What is S4? Distance traveled in 0 to 4 seconds. Then what is D5? Distance traveled in 5th second. So 5th second start from 4 to 5. Just now we understood. 1 second start from 0 to 1. Third second start from 2 to 3. The 5th second start from 4 to 5. 4.1, 4.2, 4.3. What is this? That is 5th second.
So 4 to 5 is the fifth second. That means this is d5. You understand this? So मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर बोलूं 100 सेकेंड, 100th second, that is 99 to 100 is the 100th second. Okay, if I say 11th second, that is 10 to 11 is the 11th second. हम क्या सोचते हैं 11th second मतलब क्या 11 to 12. That is not 11 to 12. 11 to 12 is the 12th second. 12th second के कैलकुलेशन है 11 से 12 तक के बीच का. Starting from जैसे 1 second is not 1 to 2, it is 0 to 1. Third second, third 3 RD. Third second is from 2 to 3, not 3 to 4. समझ में आया? वैसे अगर मुझे d5 निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन फिफ्थ सेकेंड, देन इट इज व्हाट s5 माइनस s4. दिख रहा है? ध्यान से देखो, इधर 5 है तो इधर 5 है और 5 से एक कम 4 है. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिराइव करेंगे. व्हाट इज sn? डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम 0 टू n सेकेंड. व्हाट इज s ऑफ n minus 1? डिस्टेंस ट्रैवल 0 टू n minus 1 सेकेंड. Why n minus 1? देखो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, फिर कब लिया 5 minus 1. So if I take n minus 1, what is dn? Distance traveled in nth time. And what is dn? sn minus s7 minus 1. d5 s5 nn same होगा, 5 same होगा और यहाँ पे 5 minus 1 होगा, तो n minus 1. Now use this formula. What is this s formula? This u into t. That means sn, distance in n time. U into n, in the place of t I am writing n, plus half a n square, in the place of t I am writing n square, minus s of n minus 1. That is what n minus 1 second saying. So u into t के जगह n minus 1 plus half a t square n minus 1 whole square. Solve it. This is your homework. Solve it. You will get the expression like this: u plus a by 2, 2n minus 1. You understand what is the difference between dn and sn? If I say sn, that means it is distance traveled from 0 to n second. But if I say dn, it is the nth second. That is n minus 1 to n. Clear? अगर कोई बोलेगा what is s9 and what is d9? s9 is what? 0 to 9 seconds का distance. But what is d9? 8 to 9 seconds का distance. 9th second कब से start हो रहा है? 8 से start हो रहा है, 9 तक जा रहा है. So 8 to 9 seconds. Is that okay, class? You understood? Okay. Now we will discuss the last part of the uniform accelerated motion of your Pradeep refresher. That is, different graphs are discussed out there. So we'll discuss those graphs all together. Okay, class. Now listen very carefully. What we need to do? Any motion parameters will be given to you. What are the parameters? Acceleration के value. Value में nature दिया रहेगा. Whether it's a constant or it is increasing, or whether it is positive or negative. What is initial velocity? Positive or negative or 0. These parameters will be given to you, and you need to find velocity time graph of that motion whose parameters are given to you. Clear? So let's talk about one by one. ऐसा बोल देता है, a body which is moving in a straight line with 0 acceleration. Draw its velocity time graph. So when it says 0 acceleration, that means what? Uniform motion. There is no acceleration. That means velocity is constant. So if velocity is constant, what is the vt graph? Straight line. ये तो पढ़ाया गया है पहले भी. Velocity will not change. Let's say initial velocity is u. At t equals to 0, initial velocity is u. Then any time you go, its velocity will remain same. So it's a straight line. So if this is 0 acceleration, directly and indirectly, we're talking about uniform motion. Okay. Now next. You have to draw a vt graph for a body whose acceleration is positive, but it is constant. Constant acceleration है, लेकिन positive है. Now acceleration positive negative का मतलब मैंने पढ़ाया था. If I say this is vt graph, अगर acceleration positive है, that means the line will be somewhere like this. Angle is less than 90. Acceleration is positive because v by t is acceleration, slope, angle. Similarly, अगर acceleration negative है, that means this angle should be greater than 90. तो ये समझना पड़ेगा. तो vt ग्राफ ऐसा होगा अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऐसा होगा अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है. ये समझ में आ गया? पक्का? ओके. नाउ सी, वी नीड टू ड्रॉ अ vt ग्राफ. दिस इज t, दिस इज v ऑफ अ बॉडी हुज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. मतलब ग्राफ ऐसा होगा, लाइन ऐसा होगा. बट स्टार्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम है एट t is 0, वेलोसिटी 0 हो गया.
acceleration is positive. Why this angle is less than 90? You understand? Positive and constant, that also you have to see. अगर constant नहीं होता तो ये straight line नहीं होता, curvy path होता. Clear? Constant है मतलब equal distance, equal velocity, velocity in equal time interval. That's why this. So you need to understand each and everything. Positive, that means the line will be like this. Constant, that means it's a straight line. Okay. Next, again acceleration is positive and constant, but initial velocity is positive. तो initial velocity, positive velocity, कुछ ना कुछ है. Okay, that means that this is the positive, this is positive y-axis. So plus u, it will start from here. Clear? Plus है मतलब लाइन ऐसा होगा. Constant है, straight line होगा like this. Clear? Okay. Now let's go for this. Okay, v versus t. Initial velocity. Okay. थोड़ा कचरा हो गया. क्यों कचरा हो गया? इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, तो मान लो ये टाइम एक्सिस है. ओके, एंड एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव. एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, दैट मींस पॉजिटिव है मतलब फिर से लाइन ऐसे ही होगा, बट द स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? नेगेटिव है. सो लेट दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी माइनस c. The body will start from negative initial velocity. Clear? And the acceleration is positive and it is constant also. So that means the line is like this. This angle is less than 90. See? So positive है मतलब this angle less than 90. Constant है, it's a straight line. You understood? So each and everything try to understand. और plus है मतलब लाइन ऐसा होगा, angle less than 90 होना चाहिए. Constant है मतलब straight line होगा. Clear? Okay, now see. Acceleration negative, initial velocity positive. No changing direction. ये थोड़ा ध्यान से समझना. Now what I want to say, velocity time graph constant है, that means a straight line, but negative है, that means the line will be like this. ऐसा होगा लाइन, ऐसा नहीं होगा. Clear? ऐसा ऐसा होगा. Done? Because the angle should be greater than 90 degree. Where the body is starting with positive initial velocity, this is plus u. So line will be like this. Okay. Now, it will not cross this side. It will not go to negative y-axis. Why? Because there is no change in the direction of motion. Okay. The same graph again we have. अब देखो ध्यान से. Excuse me. Starting with positive initial velocity. Constant है, straight line होगा, negative है. Now, that means it's velocity changing the direction. Minus आ गया velocity. So अगर मैं negative velocity बोलूँ, that means direction of velocity is change. That means change in the direction of motion. Acceleration negative है. Clear? मतलब क्या हुआ? गाड़ी आगे जा रहा था, लेकिन ब्रेक मारे हमने ब्रेक मारा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव. धीरे 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 वेलोसिटी घटेगा. देखो धीरे धीरे वेलोसिटी घटा. एज अ टाइम इंक्रीजिंग वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग और वेलोसिटी जीरो हो गया. देन वो पीछे चलने लगा, वापस बैक आने लगा. दैट मींस दिस वेलोसिटी विल इंक्रीज. सी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिस इज दिस स्ट्रक्चर. अब ये क्या बोलेगा? गाड़ी चल रहा है, दिस वेलोसिटी, ब्रेक मारा, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. सो विद टाइम इज वेलोसिटी विल डिक्रीज और आके जाके रुक जाएगा. एट दिस पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो. क्लियर? सो यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ. You understood? Okay, let's go to the next part. Acceleration is negative, constant, initial velocity negative. इसका क्या करेंगे भैया? Acceleration negative है, initial velocity negative है, मतलब ऐसे ग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा. Okay, why नीचे की तरफ क्यों भेजा? initial velocity negative है, that this is minus c. And acceleration negative है but constant है, मतलब लाइन ऐसा होगा. देखो, see, अगर मैं लाइन को अगर स्ट्रेच करूं तो ये एंगल कितना होगा? Greater than 90 हुआ ना? That means acceleration negative. So main agenda is that to make the angle greater than 90. If you have to make a negative acceleration. And why straight line? Because it's a constant. Clear? Now, अब ये देखो हाँ, acceleration positive but it is increasing, not constant, not uniform. It is increasing. Clear? तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना. Don't get tense. Try to understand nicely. The graphs are not tough. You just need to understand it nicely. Please pause the graph, pause the video, and show this
when we can make acceleration negative, how we can make acceleration positive. Okay, so we need to draw a velocity time graph of such a body whose acceleration is positive and it is increasing. Acceleration धीरे धीरे बढ़ेगा, तो velocity धीरे धीरे बढ़ेगा ना, but यहाँ भी तो velocity बढ़ रहा है, यहाँ भी तो velocity बढ़ रहा है with time, but it uniformly बढ़ रहा है. But अब since acceleration is increasing, uniformly नहीं बढ़ेगा, so it won't be a straight line. Clear? So let's start with the first point. This is graph 1 and this is graph 2. So both the graphs I will draw on the same axis. तुम बुक में अलग अलग बनाना, कॉपी में अगर बना सको तो. Okay, दोनों एक साथ में बना देना. Okay, see. Acceleration is positive, increasing, initial velocity is 0. Starting from here. Since it is increasing, that means it won't be a straight line, it will be like this. This is graph 1. So with time, velocity is increasing, but not increasing uniformly. Straight line नहीं होगा. Clear? Next, initial velocity positive. चलो ये बना देते हैं अलग अलग VT. Positive initial velocity, that means the graph is start from here. And it is positive acceleration, मतलब बढ़ेगा velocity. Okay, but uniformly नहीं बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? Curvy way में बढ़ेगा. Clear? You understand? Okay. Now we are interested in 3 position time graph. Okay. Okay, now see. Position time graph, xt graph you need to draw for different motions. Motions parameters will be given to you. यहाँ पे acceleration का value बहुत ही कम दिया रहता है. Velocity का value. See, first velocity 0. We need to draw xt graph for velocity 0. एक ऐसे बॉडी का xt ग्राफ बनाना है जिसका velocity 0 है. Can I say stationary object? Velocity 0 मतलब कहीं मूव नहीं कर रहा, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाऊं? टाइम एंड पोजीशन. क्या होगा? वो तो मूव ही नहीं कर रहा. दैट मींस विद टाइम इट्स पोजीशन विल नॉट चेंज. बस खत्म हो गया. वेयर x0 इज व्हाट? इनिशियल पोजीशन. x0 इज इनिशियल पोजीशन. ओके, अब क्या करूं? विद इंक्रीज इन टाइम द पोजीशन विल रिमेन सेम. You understood? Position will remain same. Okay, this is a graph. ये ग्राफ हमने पहले ही पढ़ा था. Okay, xt graph of a stationary object. याद है? Okay, now next, ऐसे बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है जिसका वेलोसिटी पॉजिटिव. तो वेलोसिटी कैसे आ गया भाई पोजीशन टाइम ग्राफ से? वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? तो पोजीशन बाय टाइम इज वेलोसिटी, मतलब स्लोप. y by x वेलोसिटी आ रहा मतलब स्लोप, मतलब वो लाइन जो एक बार ऐसे खींचना पड़ेगा और एक बार ऐसे खींचना पड़ेगा. इन दिस केस वेलोसिटी विल बी नेगेटिव एंड इन दिस केस द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव. ओके, वही बोला गया कि वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट है मतलब स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव है मतलब एंगल लेस देन 90 होगा. तो चलो ये 1 2 3 ग्राफ्स आते हैं. सो ड्रॉ 3 ग्राफ्स है. ओके, सो फर्स्ट वन, इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है. So xt graph. Okay, initial position positive. Let this is plus x0. यहां से कांस्टेंट है, velocity is constant. Velocity constant मतलब क्या? Equal distance in equal time interval. That means the straight line. Why ऐसा लाइन क्यों खींचा? ऐसा क्यों नहीं खींचा? इस तरफ क्यों नहीं खींचा? इस तरफ खींचूंगा तो एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएगा. ऐसे खींचूंगा तो एंगल लेस देन 90 होगा. देखो इधर, the angle is less than 90. You understand? Class. So these things you don't need to show. ये दिखाना नहीं पड़ता है, बस मैंने ऐसे करके बना रहा हूं, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है. So this is graph 1. Initial velocity, initial position positive. Line is a straight line. That means the velocity is constant, and the angle is less than 90. That means it is positive. Clear? Now, next. अब क्या है? Initial velocity negative है. Okay? Initial position negative है. ये हो गया position का axis, ये हो गया time का axis. पोजीशन नेगेटिव है, मान लो ये माइनस एक्स ना, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव हो गया ना. स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन नेगेटिव हो गया. नेक्स्ट, वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब एंगल लेस देन 90 होगा एंड दिस कांस्टेंट. तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे ही बनेगा, ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट विल चेंज. क्लियर? ओके, दिस इज ग्राफ 2. नाउ गो टू द थर्ड ग्राफ, xt graph. It will again a straight line. Why? Because positive and constant. Constant means straight line, positive means angle less than 90. Clear? But the initial position is 0. That means the graph will be like this.
Done. This is the third graph. Is it okay, class? Okay, let's go to now this one. Here the velocity is negative. That means line ऐसा होगा. Done? Understood? Okay. तो चलो ये बनाते हैं पहले. So x t graph. Okay. This is the initial position plus x naught. Okay, and velocity is constant but negative. That means graph will be like this. Okay, now again इसके अंदर दो होता है जो कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा. We can write no language. अगर यहाँ से यहाँ गया no change in direction. लेकिन next graph में अगर पार कर गया there is a change in direction. That you can do on your own. One you show like this. 1A. You can write 1A no change in direction because at some time the position becomes origin. 0 पे आ गया. But इसको अगर मैं further extend कर दूं under these two situations, velocity negative, constant, initial position positive. If I draw this graph, that means there is no change in direction of the motion. लेकिन again in this case, velocity negative, constant, initial position positive. If I draw a graph extending towards negative x-axis, negative y-axis, then there is a change in direction as we studied in the earlier case. Okay. Now go to the next one. Initial position negative होगा. That means the graph will be like this. Time x, initial position negative, minus x0. Clear? But what they saying, the velocity is negative. That means graph ऐसा होगा. Velocity negative होना चाहिए. Okay? क्यों negative? देखो तो this angle with positive x-axis दिख रहा है? Greater than 90 आ गया ना? इसलिए ऐसे बनाना पड़ेगा graph. Is that okay, class? You understood what is going on? Okay. Next, this is graph 2. Next graph. अब क्या है? Position time graph. But now in this case, velocity negative, but the initial position is 0. That means the body will start from it. Initial position 0. But the velocity is negative and constant. मतलब ऐसा होगा. Such that this angle is greater than 90. ये मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिखा रहा हूँ कि एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया. Class, you don't need to draw these things. Okay, but better if you draw for the timing to make you understand those concepts and this. But in examination, if you ask you to draw this graph, you have to draw only this line. That's all. I'm drawing these angles and all to make you understand why velocity is negative, why velocity is positive. You got the idea? Okay, next, fourth one. Acceleration positive है. अब acceleration दिया है, velocity नहीं दिया है. Acceleration positive है लेकिन constant है. Acceleration positive है लेकिन constant है. Initial position plus है. तो ये समझो ध्यान से हाँ. These two graphs are the maximum chances of coming in examination. This and this type. Okay. तुम्हें बनाना है position time graph. अच्छा बात है. Starting from initial position x0 plus x0. x0. Okay. We have to start the graph like this. अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा उस तरफ कि इस तरफ. ये ग्राफ ऐसा होगा कि ऐसा होगा. ऐसा कब होगा? जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा और कांस्टेंट होगा. पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा एंड पॉजिटिव वेलोसिटी होगा एंड कांस्टेंट होगा. तब ऐसा ग्राफ बनेगा. पॉजिटिव एंगल लेस देन 90. क्लियर? कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन. ऐसा कब बनता है ग्राफ? जब एक्स वेलोसिटी नेगेटिव हो. स्लोप इज वेलोसिटी ना, नेगेटिव हो, एंगल ग्रेटर देन 90. स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब कांस्टेंट हो. नेगेटिव हो ऐसा बनेगा. स्ट्रेट लाइन जब कांस्टेंट होगा. क्लियर? बट फ्रॉम द वेलोसिटी ओनली वी अंडरस्टैंड ना whether the graph will be a straight line towards inclined angle less than 90 or angle greater than 90. So यहाँ पे तो वेलोसिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है, तो क्या करें? So acceleration के बारे में बोला गया है, तो अगर if acceleration is positive, you will write this thing here. If acceleration is positive, velocity will be also positive. Okay? If acceleration is positive, the velocity is also positive. Done? Understood this? As well as it is constant. Acceleration is given. That means the velocity will increase now. Okay? The velocity will increase. Do you understand this? समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? The velocity will increase. Here, the velocity was constant. The velocity was constant. If I say velocity constant, that means from here to here, at every point, the slope is same.
slope. Velocity is slope na. Slope matlab line. At every point, if you draw the line remains the same. That means at every point the velocity is same. But here there is an acceleration. That means acceleration is constant and is positive. That means acceleration is positive. That means what? Velocity will increase. Velocity will not be same. ये सब लिखोगे, constant लिखोगे, ठीक है? तो velocity constant नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी में acceleration है. इससे velocity constant नहीं है. ओके, constant velocity का straight line बनता है. यहाँ पे तो velocity constant नहीं है, तो straight line नहीं बनेगा. You understood this? Clear? ओके, अब इसको थोड़ा जनरलाइज वे में समझते हैं. ओके, straight line तो नहीं बनेगा, तो क्या होगा भाई? If it is not a straight line, then what it will be? How it will be? So velocity, acceleration है पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, acceleration है पॉजिटिव है. बॉडी कहीं से स्टार्ट किया, बॉडी एक जगह से स्टार्ट किया, ठीक है. अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन बना दूं, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं? विद टाइम पोजीशन इज इंक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग. विद टाइम पोजीशन विल इंक्रीज. ऑफ कोर्स विद टाइम पोजीशन तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि वेलोसिटी है ना बॉडी में. बट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. लेकिन मेरे इस केस में पोजीशन तो बढ़ेगा विद टाइम, बिकॉज एक्सीलरेशन बॉडी में है, वेलोसिटी बॉडी में है, तो बॉडी विल ट्रैवल मोर डिस्टेंस विद टाइम, बट इट विल नॉट ट्रैवल यूनिफॉर्मली. जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस यूनिफॉर्म टाइम ट्रैवल कर रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ होगा, कर्वी. व्हाई कर्वी? यू अंडरस्टैंड? बिकॉज since the body has acceleration, that means at every point the velocity will change. आप इस पॉइंट में tangent बनाओ, 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 अलग अलग स्लोप आएगा. स्लोप लाइन का आता है, राइट? कौन सा लाइन का? tangents का. यहाँ पे कोई भी पॉइंट में tangent बनाओ, वो itself is a line, and there is only one tangent, that is the line. But in this graph, every point has different tangents. You understand when I'm talking about class? If I talk about tangents, you understood? जैसे यहाँ पे एक tangent ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक tangent ऐसा बनेगा, यहाँ पे एक tangent ऐसा बनेगा. So every tangent will have different slopes, different velocity. हाँ, different velocity तो है ही, because acceleration is positive. Acceleration का वैल्यू कुछ ना कुछ है ना. Okay, since the acceleration वैल्यू कुछ ना कुछ अलग अलग है, that means उसका velocity भी change होगा हर एक पॉइंट में. And as well as acceleration positive है, that means velocity positive है, that means body is covering distance. That means distance will increase with time. You understood? I hope you understood everything. Okay. तो दो तीन चीज समझना है हमको. क्या? एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल होगा, इस डिस्टेंस बढ़ेगा विद टाइम, पोजीशन बढ़ेगा विद टाइम. नेक्स्ट, सिंस बॉडी में एक्सीलरेशन है, दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा. डन? यू अंडरस्टूड दिस क्लास? आई होप. इज इट क्लियर? Clear nicely. Now think about the next part. अब इसका क्या करें? Acceleration नेगेटिव है, लेकिन कांस्टेंट है, नेगेटिव. इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है. चलो आप देखते हैं अब क्या होगा. पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब यहां पे इनिशियल पोजीशन. अब क्या होने वाला है? क्या होगा क्लास? तो अब देखो, एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब क्या? गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चलते चलते ब्रेक मारा, ठीक है ना, दैट इज एक्सीलरेशन नेगेटिव. रिटार्डेशन मारा तो धीरे 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 आगे जाके रुक जाएगा ना, ऐसा होगा ग्राफ. ओके, अंडरस्टैंड? तो ये डिस्टेंस थोड़ा ट्रैवल किया, देखो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद धीरे धीरे डिस्टेंस जहां पे था वहां पे आ गया. क्लियर? तो एग्जैक्टली वहां पे तो नहीं आता, थोड़ा डिस्टेंस में जाके रुक जाता है, मतलब इस लेवल के थोड़ा ऊपर में जाके बॉडी रुक जाएगा. एट दिस टाइम द बॉडी विल नॉट कवर एनी मोर पोजीशन. क्लियर? क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, so I hope every graph is clear now. Okay, this is all about the theory of uniform accelerated motion of Pradeep refresher. Okay, in the next day we will start doing different numericals on uniform accelerated motion. Thank you class. Please complete all the theories nicely.